चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं लुचियाने मांजो हमारे साथ मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम नेदरलैंड्स, और पाकिस्तान के मेक अ विश फाउंडेशन के बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इश्तियाक बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं एंड हम इन्हें खुशामदीद कहेंगे। एंड बेग साहब, आपकी इजाज़त से आई वुड लाइक टू फर्स्ट वेलकम Luciano, and I would like to certainly know that Geo Pakistan chapter has been doing wonders as well since many years. But when it comes to fulfilling wishes which require global connections, is it easier or is it challenging? Because you Make-A-Wish is already present in almost 50 countries. How do you take the process step by step when there comes a wish from a certain country which requires, you know, traveling or maybe meeting another personality or doing something unusual? Yeah, well, first of all, let me thank you for inviting us today. It's an honor to be here. It's my first time in Pakistan, but I'm overwhelmed by the welcome atmosphere and the warmth that I received since I arrived. And thanks to Istiag for organizing all the great hospitality so far. So granting a wish from one country to another is what we call a process that we call the wish assist. And it's one of the specific USP that Make-A-Wish can offer to our children. It requires a lot of coordination and organization among our affiliate, but also there is the coordination made by our central office to ensure that everything is fulfilled and everything works in a proper way. So it starts with posting the wish on a portal which is called the Wish Assist portal, in which all the details are outlined, and Make-A-Wish International ensures that the receiving affiliates is ready to provide all the necessary assistance, all the necessary support that the child and whoever accompanies the child requires in order to make it successful. Can you share a few examples that required really a great deal of effort and that was so unusual that even the Make-A-Wish was surprised that how should we go about it? Well, there are a number of examples of children that have been going from one country to another, especially when they want to meet celebrities or when they want to assist, like, you know, happened recently, Formula One Grand Prix, or meet their favorite drivers. And so, you know, it comes into play the relationship that we have with the destination subject. And how cooperative these celebrities are? Generally very cooperative. We must admit that in general, when we talk about granting a wish, everybody seems very positive in responding. Obviously, provided the constraint of the time that they have. Yes. Sometimes the children have to wait a little bit. But in general, we get very good response from all celebrity around the world. Lovely. बेग साहब आपकी तरफ आएंगे। आप लोग माशाल्लाह बता सकते हैं, एक फहरिस्त है आपके पास कि अब तक कितना काम हो चुका है Make-A-Wish के तहत पाकिस्तान में? थैंक यू अब्दुल्ला। फर्स्ट ऑफ ऑल, जियो की सपोर्ट जो Make-A-Wish का हमेशा रही है, और आज हमारे लिए बड़ा दिन है कि मिस्टर लुचियानो इज विजिटिंग पाकिस्तान टू अटेंड द एनुअल फंड रेजिंग डिनर। अभी आप इंटरनेशनल विशेस की बात कर रहे थे अब्दुल्ला, ये इतना बड़ा इदारा है कि अगर आज पाकिस्तान का कोई बच्चा कहता है कि उसको अमेरिका के सदर से मिलना है तो इट विल बी पॉसिबल विद इन नो टाइम, क्योंकि दुनिया इसको जानती है। अमेरिका के अंदर भी बहुत बड़ा नाम है और हमने बहुत इंटरनेशनल विशेस की हैं। लास्ट ईयर एक बच्चा था, वो ग्रैंड प्री रेस में गया था एंड ही मेट द चैम्पियन आल्सो, बट ही पास्ड अवे। कुछ 2 महीने पहले उसकी मौत हो गई है। और जॉन सेना इज़ ए ग्रेट सपोर्टर ऑफ Make-A-Wish, जिससे बच्चे मिलने गए हैं। मलाला यूसुफजई से बच्चे मिलने गए हैं। सलमान खान जो थे उनसे मिलने गए। इट वाज ऑल पॉसिबल बिकॉज हमने पोर्टल पे डाला कि जी हमारे बच्चे हैं, यहाँ जाना चाहते हैं। विद इन नो टाइम इंटरनेशनल ने फिर उनकी वो की। बट हमारे हीरोज़ जो बच्चों के हैं, ये तो बहुत कम विशेज़ आती हैं। जो अभी एक विश पाइपलाइन में है, एक बच्चे की विश आई है कि ही हिमसेल्फ इज़ ए ब्लॉगिंग वगैरह करता है और सोशल मीडिया पे है, जो दुनिया का एक हीरो है। आई मीन उसके कोई 25 या 30 मिलियन से भी ऊपर फॉलोवर्स हैं। उससे उसके इज़ एन अमेरिकन चाइल्ड,
और उसको इंशाल्लाह हम बहुत जल्द उसको वो कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो यूनिक विशेज़ हमने की हैं, एक दिन के लिए फ़ौज का हिस्सा बने हैं, आर्मी चीफ से भी बच्चे मिले हैं, पुलिस का भी आप दिखा रहे थे, पुलिस में भी गए हैं, और इसके अलावा बेशुमार विश टू बी अ पायलट, विश टू बी एयर होस्टेस, विश टू बी, बहुत ज़्यादा हमारा वो होता है। बट ज़्यादातर हमारी विशेज़ जो होती हैं वो उम्रे की बहुत विशेज़ आ रही हैं। मतलब अभी भी हमारे बच्चों की एक टीम जो है वो गई हुई है उम्रे के लिए। तो मेक ए विश जो है तकरीबन 16 सालों में हम कोई 10,000 से ज़्यादा बच्चों की विशेज़ पूरी कर चुके हैं। And people can adopt one of the wishes too? Oh yes. So कोई ख्वाहिश आप, do you have a list of donors जिनको आप भेजते हैं, you broadcast the wish to the donors and then anybody can just pick and take it forward? अब्दुल्ला, आप हमारी वेबसाइट है www.makeawish.org.pk। अगर आप इस पे जाएंगे तो देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ दोज विशेस द चिल्ड्रंस आर वेटिंग फॉर द विशेस टू बी फुलफिल्ड, और आप उसको कोई अडॉप्ट करना चाहें तो यू कैन अडॉप्ट द विशेस आल्सो। Certainly. Mr. Luciano, as much as you strive to fulfill the wishes of these children, it must be really heartbreaking too. I wonder, because you know most of them are fighting for their lives, and you know during this whole process, how do you deal with this? Because at the end of the day we are all emotional human beings, and then certainly a few months down the lane, a few years down the lane, we get to know we are glad that you know many kids are striving and thriving and surviving, but a few don't. Well, it's certainly a great battle that we are fighting together with our children that are certainly in the most challenging time of their life. Most of the children have a normal life. They go to school, they go to sports, they have siblings, friends, and all of a sudden, maybe for a check or a medical control, they enter in a sort of tunnel that they don't know how long and how they're going to get out from, and the whole family enter in that state. So we say that really that takes the childhood away from the child. And not only from the child, but from the other siblings as well. Yeah, absolutely. The siblings and the family, they all get involved. And really the wish restores the childhood to the child and gives the family the joy and the strength and the hope for the future in the moment that they need it most. We recently concluded a study that shows that in Pakistan there are about 700,000 children every year that could be eligible, 70,000 children every year eligible for a wish. So you can imagine, you know, the effort that we need in order to ensure that we reach as many children as possible. And that's why we need the support of all the donors and the compassion of all the people that can support this incredible mission to ensure that we reach as many children as possible. मिस्टर लुसियानो ये कह रहे हैं कि एक स्टडी इन्होंने अभी रिसेंटली कंडक्ट की है, उसके तहत 70,000 पाकिस्तान में हर साल ऐसे बच्चे होते हैं जो एलिजिबल होते हैं कि उनकी ज़ाहिर है वो नहीं इतने वसाइल रखते कि वो अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकें, और उनको इस लिस्ट में आना चाहिए। इसलिए डोनर्स से अपील भी साथ साथ कर रहे हैं कि वो आएँ और दिल खोल कर, यू नो देयर इज़ अ वेबसाइट, आप जाएं, आप किसी भी बच्चे की डायरेक्ट विश अडॉप्ट कर लें, मतलब वो विश फुलफिल होगी, आपको पता भी लग जाएगा, आप खुद भी जाके ये सारा प्रोसेस ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप नहीं जाना चाहते हैं या नहीं आपके पास वक्त है तो आपके पास वीडियो और तस्वीर आ जाएगी। हाँ जी, वो हम जब आप अडॉप्ट करते हैं तो वी इन्वॉल्व यू एंड वी विल सेंड यू द पिक्चर ऑफ द चाइल्ड कि उसकी विश ग्रांट हुई है। एंड यू नो कितनी मासूम लिटरली एक साइकिल, एक गुड़िया तक की विशेज़ होती हैं लोगों की, एंड गिवन एन अपॉर्चुनिटी उनको दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए होता। यू नो एट टाइम्स देयर आर लिटिल गर्ल्स हु जस्ट वांट अ बार्बी डॉल। जी हाँ, दिस इज़ अ वेरी कॉमन विश फॉर द बार्बी एंड द बार्बी डॉल की बात है। अब्दुल्ला, पाकिस्तान में पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है कि एक बाप को ये मालूम होता है कि उसके बच्चों का जो लाइफ स्पैन है वो बहुत शॉर्ट है, और उसके बावजूद वो विश वो उसकी पूरी नहीं करते। तो यही फाउंडेशन जो है उसका ये है कि वो बच्चे जो जानलेवा मर्ज में मुब्तला हों वो कोई हसरत या ख्वाहिश लेके रुखसत ना हो। और हमें भी ये खुशी है कि जो बच्चे भी आज एक बड़ी तादाद हमारे दरमियान नहीं है उन बच्चों की जिनकी विशेष हमने ग्रांट की है, मगर खुशी यह है कि एक मुस्कुराहट लेके गए और ये पॉसिबल हुआ। आप लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया, लोगों ने किया, एंड हमारे पास इस वक्त जो लिस्ट है
यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा लाइक यू सेड कि जी उसको आप जाके अडॉप्ट करें विशेस, और आपको बड़ी खुशी महसूस होगी जब आप किसी की एक विश को पूरा करेंगे। हम अपने बच्चों की तो तमाम विशेस पूरी करते हैं, बट ये बच्चे जो जानलेवा मर्ज से मुब्तला हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं। ट्रू। आप ये देखिए कि हम अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए किस हद तक नहीं जा रहे होते। बहुत शुक्रिया। थैंक यू मिस्टर बेग, थैंक यू मिस्टर Luciano Manzo. It was great to have you over. I could not do it in your local language, but I really appreciated the invitation. Thank you. We really appreciate what you're doing actually. Thank you.